Hello guys, I am Shubham from ShubhVed Tutorials. In this video, we will be solving the Part C questions. Okay, last video में हमने 10 question देखे. Now we will continue. So before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new results. This is absolutely free from your side, but it will help us grow. First question: lab-grown cells of a tumor that is wild type expressing a novel cancer antigen. Okay. And a variant of the same tumor that has lost MSc class 1 expression, right? Were injected subcutaneously into normal mice, right? Inject किया है into normal mice and also into the nude mice. Okay, dotted line is of normal mice and solid line is of nude mice. The growth of the tumors in the two mouse strains is shown below. Okay, so this you have to see and answer the question. That's simple. अभी वाइल्ड टाइप ट्यूमर है एंड MSc1 लॉस वेरिएंट है ऑफ सेम ट्यूमर इंजेक्टेड इन नॉर्मल माइस न्यूड माइस. Let's check the statements. The following statements were made based on the results observed. In normal mice, CTLs recognize tumor cells in the presence but not absence of MSc1. Okay? I will tell you the difference. You have to know that MSc class 1. What is this basically? CD8 प्लस सेल के साथ बाइंड करते हैं, राइट? T cells. तो दिस आर कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक सेल्स. ओके, सो अगर अभी MSc1 इज एब्सेंट, अगर ये लैक है, इफ दिस इज लैकिंग, देन वी विल सी नो बाइंडिंग with T cells, right? बाइंडिंग होगी नहीं, so then the role of NK cells will come in the picture. ओके, अभी नॉर्मल माइस में तो सब ठीक है, राइट? नॉर्मल है, बट व्हाट इज न्यूड माइस? न्यूड माइस इज जिसमें टी सेल्स हमें नहीं मिलते. ओके, नो टी सेल्स. गॉट इट? सो दिस इज यू हैव टू रिमेंबर. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट, नॉर्मल माइस में साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स ट्यूमर सेल को रिकॉग्नाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ MSc1 बट नॉट इन द एब्सेंस, राइट? सो दिस इज करेक्ट. अगर एब्सेंट है MSc क्लास 1 तो बाइंडिंग हो गई नहीं. दैट इज करेक्ट, कंफर्म. So A is correct. A is present in option 1, 3 and 4. 2 को करो eliminate direct. Right? This is how you can solve the questions very quickly. In nude mice, NK cells recognize tumor cell in the absence but not in the presence of MSc1. Yes. See, अगर MSc1 present है तो why natural killer cells will be activated? जरूरत ही नहीं है उनकी. तो NK cells will recognize tumor cells in the absence of MSc class 1. So A and B answer होगा from what we can see. But let's check the other options. CTLs and NK cell inhibit each other if MSc1 is present but not if it is absent. So ये एक दूसरे को inhibit नहीं करते. Okay, they do not inhibit each other. So as we saw, CTLs को चाहिए MSc class 1 and if this is absent, if this is lacking, then NK cells come in picture. Okay, that is the mechanism. Means we can say MSc1, if it is present, it will inhibit the NK cells. Got it? But not CTLs and NK cell does not inhibit each other. So this is incorrect. Next statement, in mice injected with tumors lacking MSc1. Okay, MSc1 अगर
absent है, antibody generated with the help of CD4 cells restrain the growth of tumor in nude mice. No. Okay, as I told you, nude cells में T cells ही absent है, तो CD4 भी absent है and CD8 भी absent है, so antibodies cannot be generated with the help of CD4 cells, which is again incorrect. So बाकी सारे options incorrect है, A and B confirm correct option. Got it? Next question, sucrose transport in plant cells follows both active transport and diffusion mechanisms. ये हमने डिस्कस किया है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे. द गिवन फिगर शोज द रेट ऑफ सुक्रोज अपटेक बाय सोयाबीन प्रोटोप्लास्ट एज अ फंक्शन ऑफ external sucrose concentration. Okay, so here it is given rate of uptake and here sucrose concentration. You can see the graph. तो ये ग्राफ देखना और इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Based on the given information, a researcher made following interpretation. Sucrose uptake at low concentration, that is less than 10 millimolars, is facilitated by energy dependent process. Okay, अभी देखो यहाँ पे ऐसा कर्व है, ऐसा. Okay, so we have seen this, right? Exact ग्राफ देखा है हमने. So this, why this curve is seen? Because this is a energy dependent process, right? Carrier dependent है. When the carrier is saturated, the uptake stops, जो transport है stop होता है. So yes, this is 100% correct. A. Okay, energy dependent process means active process, ATP dependent, right? उसके बाद you can see a straight line, right? Next option is sucrose uptake at low concentration is a carrier independent process. No, carrier dependent है. Okay, when the carrier is saturated, मतलब कैरियर पूरा भर गया है और अंदर मॉलिक्यूल्स को नहीं ले सकता, दैट टाइम वी विल सी दिस टाइप ऑफ फ्लो. ओके, मतलब एक पॉइंट के बाद वो स्टॉप हो जाता है, राइट? इट विल स्टॉप हियर. ओके, ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग. ऑप्शन 1 एलिमिनेट, ऑप्शन 2 एलिमिनेट, राइट? ऑप्शन सी क्या है अभी? एट हायर concentration, sucrose enters the cell by diffusion down its concentration gradient. See this straight line जो हमें दिख रही है, this is of diffusion. Okay, diffusion. So yes, this is 100% correct again. Diffusion की वजह से वहाँ पे sucrose अपटेक हो रहा है at higher concentration. So option 3 A and C आंसर होगा. Then to let's check the other option. Other statement, inhibition of ATP synthesis with metabolic poison. Okay, ATP synthesis को inhibit करेंगे. Can block only the linear component. No, linear component को नहीं ब्लॉक करेगा, इसको ब्लॉक करेगा ना. जो ग्राफ दिख रहा है हमें यहाँ तक, that one, that is called by facilitated diffusion. Okay, that is called facilitated diffusion. and यहाँ पे diffusion है. So this is again incorrect, right? Option 3 आंसर होगा. See, this is the exact table that we saw. Okay, जो green line है that is simple diffusion, see, and channel mediated transport. Okay, and जो red line है that is transporter mediated, right? Dependent on energy. So these pictures from the books are very important and I try to add them in the video because those are important. Okay, उससे ही question solve हो जाते हैं. Shown below is a hypothetical metabolic pathway leading to the production of lignin molecule. Okay, and a lignin molecule.
and the three pathway enzymes X, Y, Z, of which Z is regulated by feedback inhibition, right? Z is inhibited by feedback inhibition means what? इसका जो प्रोडक्ट है वही उसको इनहिबिट करेगा. ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत रिपीट हुए हैं, राइट, हाईली रिपीटेड. Which one of the following strategies will lead to the generation of plant with highest level of lignin? Okay, lignin को अभी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना है, राइट. So let's see which will be the best strategy. सिर्फ ये पाथवे से आंसर फाइंड कर सकते हैं. Let's see. Over expression of the gene expressing enzyme X. See, enzyme X को अगर ओवर एक्सप्रेस किया तो ये भी हाई होगा as well as this. So not only lignin will be produced in high amount. Wrong. सिर्फ lignin हमें प्रोड्यूस करना है हाईएस्ट लेवल में. नॉकआउट ऑफ द जीन एक्सप्रेसिंग Y. ओके, Y को करना है डिलीट. नॉकआउट मीन्स डिलीशन. तो अगर Y को नॉकआउट किया तो टायरोसिन ये जो पाथवे है ब्लॉक होगा. नो टायरोसिन विल बी फॉर्म. ओके, टायरोसिन नहीं बनेगा. देन विल व्हाट हैपन, दिस पाथवे विल कंटिन्यू. तो यस, ये आंसर हो सकता है. ओके, ये आंसर हो सकता है, बट डायरेक्ट आंसर मत करो. कीप इट ऑन द होल्ड. चेक द नेक्स्ट ऑप्शन ऑल्सो. ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स एक्सप्रेसिंग एंजाइम्स X and Z. X and Z दोनों को ओवर एक्सप्रेस करो. बट अगर X को ओवर एक्सप्रेस किया Y भी प्रोड्यूस होगा ही ना, राइट. सो इस पाथवे में अगेन देयर विल फॉर्मेशन ऑफ टायरोसिन, राइट. नो, आई कैन अंडरस्टैंड. Z को ओवर एक्सप्रेस किया लिग्निन बन सकता है, बट टायरोसिन बनेगा ना. वी वांट ओनली लिग्निन. लेट्स चेक द लास्ट ऑप्शन नाउ. ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन expressing enzyme X. See, enzyme, I will erase this for better clarity. एंजाइम X को ओवर एक्सप्रेस करेंगे एंड नॉकआउट ऑफ जीन एक्सप्रेसिंग एंजाइम Y, एंड Y को करेंगे नॉकआउट. ओके, और डिलीट बेसिकली. तो यस, दिस इज मोस्ट एक्यूरेट. X को करेंगे ओवर एक्सप्रेस एंड Y को करेंगे नॉकआउट. So this is the best suitable, best strategy for the production of highest level of lignin. Option 4 answer होगा and not option 2, right? This is how you can answer. Okay, because option 2 में दिया है सिर्फ Y को knockout करेंगे, but we have to over express this because we want highest level of lignin. Got it? Given below are statements about action of glucagon in human body, right? इसको सॉल्व करना भी इजी है. आई विल शो यू हाउ. दिस इज फ्रॉम अ बायोकेमिस्ट्री. ग्लाइकोलाइसिस हमने देखा है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी देखा है अभी तक. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, these are the two sugar related hormones, right? इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कम करता है, राइट, फ्रॉम द ब्लड. एंड ग्लूकागोन ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, राइट. दिस यू हैव टू सी. ओके, अभी इसको हमें पाथवे से रिलेट करना है. इट डज नॉट कॉज ग्लाइकोजेनोलिसिस इन मसल. ग्लाइकोजेनोलिसिस मीन्स व्हाट? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन टू गेट ग्लूकोज. ओके, अभी ग्लूकागोन का मेन रोल क्या है? ग्लूकोज को इंक्रीज करना है. ग्लाइकोजेनोलिसिस में क्या होगा? ग्लूकोजन इंक्रीज ही होगा, राइट.
It does not cause glycogenolysis in muscle. It will cause ना, because glycogenolysis से ही ग्लाइकोजन से ग्लूकोज फॉर्म होगा. So does not cause, I think this will be wrong. Okay, it decreases ketone bodies formation in the liver. Ketone bodies is basically related to fat, right? So decreases ketone body formation. I guess it will increase the ketone body formation in liver. Glycolysis का क्या होगा? In simple, glycolysis is glucose का breakdown, right? Glucose breakdown. तो if ग्लूकोज को अभी इंक्रीज करना है, ग्लाइकोलिसिस हमें नहीं चाहिए, तो नो ग्लूकोज ब्रेकडाउन. ओके, so this is again wrong, right? Ketone body formation increase because what happens, especially fasting जब होता है तो we want energy ना, glucose, then fatty acid oxidation and ketone bodies का formation speed up होता है. Okay, next, it does not cause lipolysis in the liver. This is also wrong. Lipolysis means what? Lipolysis means what? Fat breakdown. तो फैट ब्रेकडाउन से भी ग्लूकोज फॉर्मेशन हो सकता है, राइट? एनर्जी, ओके, फैट से. तो दिस इज आल्सो अगेन रॉन्ग. लिपोलिसिस होगा. ए बी सी इज रॉन्ग. लेट्स चेक द लास्ट ऑप्शन. इट इनहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोनल पायरुवेट टू पायरुवेट इन द लिवर. ओके, ग्लाइकोलिसिस का लास्ट स्टेप. सो यस, ग्लाइकोलिसिस अगर स्टॉप होगा तो ये भी जो कन्वर्जन है फॉस्फोनल पायरुवेट टू पायरुवेट, इसका कन्वर्जन इनहिबिट होगा. सो यस, दिस इज करेक्ट. So D we want. There is a mistake, I guess, in my selection. Option 1 eliminated, option 2 eliminated. 3 and 4 में से आंसर होगा either C with D and A with D. C is 100% correct. C जो है 100% correct है. Let's check A. It does not cause glycogenolysis in muscle. So basically, see, everywhere there is mention of liver, because in muscle नहीं, यहाँ पे लीवर चाहिए था. So in muscle it will not cause. This will be correct. Sorry, my mistake. अगर लीवर दिया होता ना तो ये रॉन्ग होता. But this is given glycogenolysis in muscle. That can happen. Okay, ये हो सकता है. Because liver में glycogenolysis होगा to increase the glucose. Right? So A and D confirm correct है. Option 4 and not option 3. Next one. A transformation experiment is performed with 2 pneumococcal strains. One strain is resistant to 4 drugs, A, B, C, D, and the 4 drugs, whereas the other is sensitive to all the drugs. Both strains are mixed and the mixture is plated on media containing various combination of drugs. Right? Plated किया है, in which there are combination of drugs. The colonies obtained on these plates are given below. What we have to see, based on the above results, which one of the below option represent the most likely order of drug resistant genes. Okay, this question is from genetics. Gene order हमें देखना है, right? Genetics से gene order देखना है हमें. We have to see the highest number of the scenarios. सबसे high जो है that is 942. Okay, ये सिंगल जो है ना इसको एलिमिनेट करो. दिस 2, ये जो 2 जीन्स है
उसमें देखो AD is highest. AD means A and D will be together. तो ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 में से आंसर होना चाहिए. 1 एंड 2 को करो एलिमिनेट. ओके, अभी D के साथ आइदर C आइदर B. So let's check the next highest. CD, CD, CD. See this one. Option 3 and then B. BC का सबसे कम है. AB तो उससे भी कम है. एंड जो 3 जीन्स है उसमें भी आप देख सकते हो 630 दिस ACD. ओके, सो D के साथ हमें C चाहिए and not B. This is how you can answer. It's just simple, right? Option 3 आंसर होगा. In a dioecious plant species, a single gene is responsible for petal color, right? A cross between a true breeding red female and true breeding white male gave rise to all red male and all white female F1 progeny. However, the reciprocal cross produced all red males and all red females. See now, जेनेटिक्स हमने पूरा सॉल्व किया है. ओके, यू विल फाइंड द प्लेलिस्ट PYQs के साथ कोर्सेस में मिलेगा आपको. तो हियर मेन थिंग इज व्हाट मेल एंड फीमेल मेंशन है. So there is most of the chance that is related to sex chromosome. Okay, this is how you can select the option, right, quickly. Mostly ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है. अभी क्या है ट्रू ब्रीडिंग रेड फीमेल. आई विल जस्ट ड्रॉ अ साइन, राइट. दिस इज अ रेड एंड दिस इज अ वाइट, राइट. इसमें क्या दिया है गेव राइज टू ऑल रेड मेल. मेल सब रेड हुआ है एंड ऑल वाइट फीमेल. So this is again not a mitochondrial. The first option है. Let's see the option. Which one of the following explains the inheritance हमें देखना है. Inheritance of petal color. First option is the gene is located in the mitochondrial genome. नहीं. Mitochondrial genome में क्या होगा? If mother is red, सब बच्चे red होंगे. Right? If mother is red, all offspring is red. But this is not seen. Males में अलग, females में अलग ऐसा हो रहा है. But this is not the case. ऑप्शन 4 भी देखो द जीन लोकेटेड ऑन द ऑटोसोम. ये भी हम नहीं कह सकते बिकॉज ऑटोसोम में रेड फीमेल ऐसा कुछ नहीं होता, राइट. नाउ दिस 2 and 3 ऑप्शंस आर कॉन्ट्रास्टिंग. मेल्स आर होमोगैमेटिक, जेनेटिक जीन इज लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम. एंड ऑप्शन 3 में फीमेल्स आर होमोगैमेटिक, gene is located on the sex chromosome. ओके, ये हमें चेक करना होगा, राइट. ये हमें चेक करना होगा अभी. इन द फर्स्ट केस हमें क्या करना है, हमें तो पता है नॉर्मल कंडीशन में फीमेल होमोगैमेटिक होता है, राइट. जो XX है ये फीमेल है ना इन मोस्ट नॉर्मल केस. बट अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी विल सी द फर्स्ट मेल केस, राइट, बिकॉज ट्रिकी क्वेश्चन है. ओके, मेल को हम लेंगे होमोगैमेटिक ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग एंड दैट विल बी करेक्ट, राइट. आई विल शो यू बोथ द केसेस. दिस इज XX, राइट. XX मेल है, डोंट कंफ्यूज विथ फीमेल, एंड XY इज फीमेल. नाउ यहाँ पे सेग्रीगेशन होगा गैमेटिक. ओके, गैमेटिक सेग्रीगेशन. this X red, this X red, this Y, this X. wait X को मार्क करना होगा.
XW, XW, and here XR. So here XR, XW, XW, XR, W, and here XR, XW, and here XW, Y, again XW, Y. Okay, so first हमें, I hope this is visible from that side. This will be red. This will be red. Right? Red females. Red males. Right? Not females ना, because XX यहाँ पे male है. And this will be white. White females. So yes, this is giving the first condition हमारी correct हो रही है. Now reciprocal process means what? उल्टा करना है. उल्टा करना है. How? How उल्टा? Let's try to make it easy. First I will write XY, XX. Okay, XX male ही है. XX male है, but this is now red. Okay, male, and यहाँ पे white है. Now let's see this X, this Y, separation of chromosomes. Then is this XX, XX, XY, X, WR, WR, R and R. तो यहाँ पे हमें all red males and all red females. Yes, ये भी confirm हो रहा है. See, the reciprocal process produced all red males and all red females. Right? So this is true, 100%. Option 2 ही answer है. Okay, now we'll tell you how the जो normal case है वो कैसे incorrect है. Let's erase this. Easy है. You should try this on the working. Draw and see. Right? Easy होगा. Now we'll see that XX ये female ही है and XY ये male है. Normal case. इसमें red है अभी female and white है male. So now let's separate the gametes. XX, XY, XX, XY. Now this will be RW. This will be R. Right? This will be again RW. Again white. R. R. Okay. So here we are getting all red. Got it? All red. but यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है. All red males and all white females चाहिए. But no. Females are red as well as males are red. Incorrect हुआ directly. Right ना? Reciprocal करने की जरूरत ही नहीं है. So this is how you will solve. Panel 1 represent 2 alleles of gene. Okay, ये panel. The coding region of wild type allele R is 3 base pair long, while the mutant allele small r has a 0.5 kb insertion. Right? ये black color जो दिखा है insertion of 0.5 kb. Black box indicate insertion in the RNA. 3 primers indicated as X, Y, Z were designed to develop PCR-based DNA marker associated with the gene. Okay, primers है अभी. A cross was carried out between lines with the genotype RR and R. F1 progeny was self.
Panel 2 and 3 represent probable patterns of DNA markers observed in the F2 progeny using different primer combinations. Now see, genotypes. This is simple. यहाँ से R आएगा, यहाँ से R आएगा, and all the F1 will be RR, right? अभी F1 में अगर सेल्फिंग किया तो हमें क्या मिलेगा? RR, RR and RR. Okay, this will be formed. Right? Now let's see markers. अभी इसमें एक ही मार्कर आया है, इसमें एक ही मार्कर आया है, और इसमें बोथ द मार्कर्स आए. शायद ये कैपिटल आर का होगा, स्मॉल आर का, राइट, एंड ये सिर्फ डोमिनेंट का होगा. एक मार्कर हमें डोमिनेंट के केस में दिखता है, राइट. दिस इज फॉर द डोमिनेंट एंड दिस इज फॉर द कोडोमिनेंट. ओके, बस इसी इंफॉर्मेशन से यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. Which one of the following statement is correct? Panel 3 represent pattern where primers Y and Z use for amplification. No. Panel 2 is an example of dominant DNA marker. Yes. Okay, सिर्फ एक बैंड हमें डोमिनेंट के केस में दिखता है, राइट. So this is correct, option 2. बस इसी इंफॉर्मेशन से सॉल्व हुआ, बाकी स्टेटमेंट्स रिलेटेड नहीं है. मतलब the F2 progeny has represented in panel 2, while we'll have 50% progeny showing no amplified fragment, lane 1. No, wrong है. A rare recombination event between the region represented by primers X and Y will lead to changes in the amplification pattern observed in panel 2 and 3. No. Okay, option 2 confirm correct है because of this dominant marker which is seen by a single band. The below pedigree shows the inheritance pattern of gene X. A loss of function mutation of gene leads to disorder in adults. Okay. Further, gene X is imprinted leads to its inactivation. Right? Imprinting means what? Silencing. Individuals who carry the mutant allele are marked with dot, while individuals who show the disorder are shaded. Okay, मतलब डॉट दिया है वो कैरियर है एंड जो शेड किया है वो डिसीज है, राइट. लेट्स सी द स्टेटमेंट्स. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड. करेक्ट स्टेटमेंट्स वी हैव टू चूज. ओके, जीन एक्स इज मैटरनली इम्प्रिंटेड. सी नाउ, अभी यहाँ पे डिसीज शो हुई है, राइट, थर्ड जनरेशन में 7 and 8 नंबर, बट व्हेन डिसीज इज एक्सप्रेस्ड, दिस इज अ मदर हु इज अ कैरियर. ओके, मदर कैरियर है 2-5. So when 2-5, when mother is a carrier, the disease is expressed. On the other side, ये father carrier है, तो यहाँ पे disease नहीं हो रही. So only there are carriers formed. See, carriers formed. Okay, carriers formed. But when this mother is affected, you are getting the diseased children, right? Girls disease है. So A is wrong. Maternally imprinting means what? Maternally silencing हुआ है. No. Maternally expression हुआ है. Paternally imprinted बोल सकते हैं. बिकॉज व्हेन फादर से आ रहा है डिसीज अलील तो कैरियर हो रहा है, नॉट अ डिसीज वन. ए को करवा मिनट, राइट. इंडिविजुअल 2-6 कैरीज एन इम्प्रिंटेड अलील. थ्री सिक्स में इम्प्रिंटेड अलील होगा. अकॉर्डिंग टू मी 6 ये कैरियर भी नहीं है बिकॉज डॉट तो नहीं है इसमें. इम्प्रिंटेड अलील कैरी कर सकता है, साइलेंसिंग हुआ होगा completely. And gene, but gene is not present only here, so they have not shown dot.
बट पॉसिबिलिटी ऑफ कैरी एन इम्प्रिंटेड एलील, यस वी कैन से पॉसिबिलिटी है इम्प्रिंटेड एलील कैरी करने का, राइट। सपोज दिस इज अ जेनोटाइप, हमने ऐसा ड्रॉ किया, दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल, तो यहाँ से तो ए ही आएगा, ए में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ए आया, ए आ सकता है या फिर ए आ सकता है, तो हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी इज देयर, बट हाउ यू कैन से इम्प्रिंटेड allele, okay, but taking it as a possibility बी ऑप्शन में दिया है, तो हम इसे करेक्ट ही समझेंगे एज पर द ऑप्शन, बिकॉज ए तो कंपल्सरी रॉन्ग है, बी भी आई थिंक रॉन्ग ही होना चाहिए, बिकॉज इम्प्रिंटेड allele की पॉसिबिलिटी कैन बी सेड, इट इज पॉसिबिलिटी, बट 100% हम श्योर शॉट नहीं कह सकते, राइट, बिकॉज इम्प्रिंटिंग तो होती है, अगर एक का एक्सप्रेशन हुआ दूसरे का इम्प्रिंटिंग होगा, राइट ना। सपोज दिस आर द टू जीन्स, अगर मदर से ए आ रहा है, फादर का ए साइलेंट होगा ऑन द सेम लोकस, एक ही एक्सप्रेस करता है, एक इनिबिट करता है, तो इम्प्रिंटिंग वैसे होती है एट दैट पर्टिकुलर लोकस, मदर एंड फादर हैव द सेम जीन, एक का इम्प्रिंटिंग होगा साइलेंसिंग, एक का एक्सप्रेशन होगा, राइट। सो आई थिंक दिस कैन कैरी एन इम्प्रिंटेड allele, we will take it as correct, okay, because b को हमें पकड़ना है, so ignore that option. Let's check the next. If individuals 3 4 and 3 5 have a child, the probability that it will carry at least one mutant allele is 0.75. Let's see now. Carry at least one mutant allele ना, carrier बननी, okay. This will be again heterozygous, okay, so we will get AA and AA, ये तो completely normal है, so 1/4 and 1/2, राइट। अगर हमने ऐसा ड्रॉ किया ए ए ए ए ए एंड ए, so this is 3 out of 4, this goes to 0.75, right, so B C चाहिए हमें, C option 3, okay, option 3. If individuals 3 4 and 3 5 have a child, probability that it will show the disorder is 0.7. no, same कैसे होगी probability, no, हम इसे लेबल कर सकते हैं आप, to check the disease, how, I will show you. If mother transmits the allele, right, then the disease is expressed. तो ए को हम मदर के केस में लेबल करेंगे, ओके, मदर के केस में लेबल करेंगे, we will draw here now A into A, यहाँ पे हमने लेबल किया है बिकॉज यहाँ से डिसीज आएंगी, ए को लेबल, राइट, देन दिस ओके, एंड सी यहाँ पे 1/4 1/4, मतलब हाफ बोल सकते हैं, हाफ, राइट, यस, बिकॉज ऑफ दिस साइन, half probability to transmit the disease allele, तो हाफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे आंसर चाहिए था 0.5, राइट, 0 point probability to show the disorder, okay, so option 3 आंसर होगा एंड नॉट द ऑप्शन 4. एज आई सेड बी का भी हम कंफर्म नहीं बोल सकते, बट अकॉर्डिंग टू
बेसिक्स जब जो हम पढ़ते हैं, एक अलील एक्सप्रेस होता है फ्रॉम पेरेंट्स, आइदर फ्रॉम मदर और फादर, और दूसरे का इम्प्रिंटिंग होता है. तो इट कैन बी सेड दैट इम्प्रिंटेड अलील कैरी करेगा. ओके, गिवन बिलो आर few statements related to genetics and linkage mapping in plants. Near isogenic lines are immortal population. What we have to do? Which one of the following option correctly describe the above statement as true or false? Okay, true or false type. I guess ये फर्स्ट टाइम आया था ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स. तो ये ट्रू है. नियर नियर आइसोजेनिक लाइंस इमॉर्टल होते हैं, दिस इज करेक्ट, ट्रू. तो ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 3 में है. 2 and 4 को करो एलिमिनेट. फिजिकल डिस्टेंस between two polymorphic marker is not linearly related to the genetic distance. True. Yes, because the physical distance है that is not related to genetic distance. Linearly नहीं होता. This is correct again. So B true present in option 3 and not 1. Who are solved? QTL identified for a particular genotype or a trait of interest always contribute equally to the trait volume. Always is an extreme statement, right? No. And equal तो contribute नहीं करते, quantitative trait है, right? This is false. Association mapping is performed using unrelated individuals of the same population. You have to remember this. This is true. Okay, association mapping performed using unrelated individuals of the same population. Last question. Given below is a table listing the names of compound and products derived from animals or plants and their use and application. Basically, this is a slightly confusing, but how I solved it, that I will show you. Okay, judged by logic. जो विंक लिस्टिंग है ये केमोथेरेपी में यूज होता है. ओके, रेड सेल साइकिल, राइट. केमोथेरेपी फॉर ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा. तो B1 ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 4 में है. 2 and 3 को करो एलिमिनेट. अभी जो डी ऑप्शन है शेलैक में शेल है, सेल मतलब रिलेटेड टू शेल कवरिंग, राइट. सो दिस विल बी ऑप्शन 2. लाइक दिस I solved. Okay, 14 for peels and food glazing. So D2 is present in option 4. 1 होगा eliminate, option 4 will be answer. Okay, and this is correct, right? This is correct. So this logic is correct because shell lac, जो shell है that is representing covering. Okay, coating basically. Then जो C है उसका है 4, lanolin, skin cream and moisture में present है. And जो A है उसका आंसर होगा 3, cognitive enhancer. Okay, so in this video also we solved the 10 questions, 10, 10, 20 questions. 25 questions solve करने होते हैं. I will find out the more 5 questions that we can solve, okay, easily using the content of our channel and logic also, right, in the next video. So that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to our channel, and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.